hours after the Aam Aadmi Party removed MP Raghav Chadda as its Rajya Sabha deputy leader and blocked his speaking rights, Chadda responded in his own way. The 37-year-old MP tweeted a video highlighting his interventions in the upper house on issues ranging from air pollution and rising airfares to gig workers' rights and the 28-day validity of mobile prepaid plans. Notably, Chadda did not caption the video, only using a Nazar amulet emoji, a talisman believed to protect against the evil eye. Raghav Chadda had often made headlines for raising issues concerning the common masses, and his parliament address videos have often gone viral. कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। Well, silenced but not defeated is the message from Raghav Chadda to the Aam Aadmi Party. Earlier in the day, the AAP wrote to the Rajya Sabha Secretariat requesting that Chadda not be allotted speaking time from the party's quota in the House. Chadda, who has been in the Rajya Sabha since May 2022, was replaced by Punjab MP Ashok Mittal. While party leaders described the change as a normal internal process with no specific reason, speculation about an internal rift between Chadda and the party high command has intensified, especially after his silence during Arvind Kejriwal's arrest in the liquor policy case ahead of the 2024 Lok Sabha elections. ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 4 ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਾर्टी ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਾर्टी ਦੇ डिसीजन ने चलते रहते हैं जी। अब उसकी जो उसके संबंध में जो पार्टी का निर्णय था वो राज्यसभा सचिवालय को अवगत करा दिया गया है। ये एक बड़े बिखराव की तरफ लगातार आप पार्टी बढ़ती जा रही है। राघव चड्ढा पंजाब के प्रभारी रहे हैं, आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे हैं और प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर राघव चड्ढा की सेवाएं अरविंद केजरीवाल जी लेते रहे हैं। लेकिन इतनी बात तय है कि जिस तरह से साख और विश्वसनीयता आप पार्टी की खत्म होती जा रही है, कोई भी समझदार राजनेता आप पार्टी में अपना भविष्य नहीं देखता है।
Meanwhile, the BJP says Chadda's removal, which is similar to AAP's action against Swati Maliwal, signals growing dissent within the AAP and raises question about Arvind Kejriwal's ability to manage the party unity. We have some more reactions coming in on this development. Listen in. स्वाभाविक है कि हटाए जाने के बाद जो है एक बार लोगों के मन में पीड़ा होती है कि हम काम कर रहे थे, हमको हटाया गया। तो कोई ना कोई पार्टी का निर्णय है, डिसीजन है, जो पार्टी डिसीजन लेती है उसको सब पार्टी के नेताओं को मानना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल साहब की किस पर नजर है या कौन उनकी ज्यादा चिंता कर रहा है, ये अरविंद केजरीवाल साहब या उनकी पार्टी को देखना है। अशोक मित्तल वहां पर लवली यूनिवर्सिटी चलाते हैं और खूब पैसे वाले आदमी हैं, ऐसी जानकारी है। For more on this, I am being joined by my colleague Sabyasachi Roy Chaudhary from the newsroom. Sabyasachi, major development. Raghav Chadda has reacted to this development, this demotion by the Aam Aadmi Party, and he has said that he is silenced, but he is not defeated. That's right, Nancy. Raghav Chadda took to social media X to give a reply to the AAP leadership, where he said that he can be silenced, but he cannot be defeated. Now, he also spoke about various points. He told that whether it was a crime to raise issues which are related to the common citizens across the country. See, Raghav Chadda is a young member of parliament. Whenever he got the opportunity to speak inside the house, Nancy, we have seen that he has been raising issues which are related to the middle class or related to the upper middle class. Now, several of the time, in fact, a lot of the people have praised Raghav Chadda for bringing these issues in the parliament, which usually tends to get ignored. Now, Raghav Chadda, he said that was it a crime to bring out the issues which are related to the general public. Meanwhile, the message that has been given by Raghav Chadda is very much clear, that despite the decision that has been taken in by the Aam Aadmi Party, he would continue to raise his voice. He would continue to raise the issues which are related to the common citizens. In fact, Nancy, when the entire scenario surrounding the gig workers were going on, we have seen that Raghav Chadda raised this issue inside the parliament. In fact, he also took a ride with one of the gig workers, understood that what are the problems that the gig workers face in everyday life. And also he raised one of the issue which is really related to the common citizen, is regarding the 28-day recharge. So if you put money, the recharge you get is for 28 days. So after the speech that was given by Mr. Raghav Chadda inside the Rajya Sabha, after the matter was raised in public domain, in fact, the telecom ministry had to change it from 28 days to 30 days. So yes, there has been impact whenever Raghav Chadda has raised these issues related to the middle class and the upper middle class. Meanwhile, Nancy, there's a lot of factors which have gone into behind the decision that has been taken by the AAP party, because at the time when Arvind Kejriwal was arrested, that particular time Raghav Chadda was in London, and also when it came to important decision making, Raghav Chadda was somewhere missing as far as the Aam Aadmi Party is concerned. Though the Aam Aadmi Party have told that this particular decision was done looking at a strategy as far as the party is concerned. It was not done targeting Raghav Chadda, but clearly, Nancy, the damage is done. We could clearly see the conflict between the AAP leaders right now. Well, that's right. Although Aam Aadmi Party is maintaining that this might be a routine rotation within the party, but do you think that Raghav Chadda's constant distancing and silence on Aam Aadmi Party's core party matters has led to this demotion and this decision by the Aam Aadmi Party? Well, Nancy, Raghav Chadda, when he entered Parliament in 2022, at that particular time, Raghav Chadda was seen as the protege of Arvind Kejriwal. Now, this has been a series of events which led to the distancing of the Aam Aadmi Party leadership and Raghav Chadda. If you talk about the time when Arvind Kejriwal was arrested, Raghav Chadda was in London for his eye surgery. In fact, the time when Arvind Kejriwal and Manish Sisodia got relief from the Rouse Avenue court, at that particular time, the Aam Aadmi Party decided to carry out a mega
Jan Sabha here in the national capital in Jantar Mantar. From that particular Jan Sabha also Raghav Chadha was missing. In fact, in the latest, if you look at the star campaigners who have been announced by the Aam Aadmi Party, Raghav Chadha's name is not there. In fact, also at the 2025 Delhi polls, we did not see Raghav Chadha actively campaigning for the Aam Aadmi Party, because at that particular time the Aam Aadmi Party needed all its cadres on ground to campaign for them. So it's a series of events that, Nancy, that have led to the distancing between Raghav Chadha and the AAP leadership.